Let me tell you how you can create this beautiful eyeshadow look in 3 steps. And don't forget to prep your eye. So first I'm taking this pink shade and applying it on my eyelid. Shade is done and now I'll blend these edges. And you have to blend these edges very nicely, very softly. Just grab your brush and do a back and forth blending. Blending hard नहीं होती है, बस थोड़ा patiently करनी होती है. So my first shade is done. Now I'm taking a round fluffy brush and I'm taking this orange shade. And I'll just dab this orange shade right here. I'm not blending it, I'm just dabbing it. So dabbing is done. Now I'll blend it back and forth. If you want, so you can do like circular motion blending also. With a small brush, I'll apply highlighter right here. Now I will apply a little bit of eyeliner. मीन्स आप में से जिसको आईलाइनर नहीं लगाना आता ना, उसके लिए भी ये बहुत ईजी है. आप बस अपना कोई भी आई पेंसिल लें और उसको बस यहाँ पे डैब करके लगा दें. अगर आपसे स्वाइप नहीं हो रहा तो सिर्फ डैब डैब करके भी लगाएंगे तो आपके पास डॉट्स की फॉर्म आ जाएगी. एंड आई एम जस्ट स्मजिंग इट विद अ ब्रश. एंड यू सी आई मेकअप इज डन. दीज थिंग्स आर ऑप्शनल. आई पेंसिल ब्लैक या किसी भी कलर में वो आप अप्लाई कर लें. अर्बन डिके की ये ग्रीन कलर की आई पेंसिल यूज कर रही हूँ. एंड हियर यू गो. मैंने कोई आई लैशेज भी अप्लाई नहीं किए, फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है. अब आप भी इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपसे ये इजी वाला आई लुक हुआ या नहीं.